distilled water, 20 milligrams potassium nitrate, 30 milligrams magnesium sulfate, 10 milligrams boric acid, 10 grams sucrose and a compound microscope. Procedure. Prepare the pollen germination medium by dissolving 10 grams sucrose, 10 milligrams boric acid, 30 milligrams magnesium sulfate, and 20 milligrams potassium nitrate in 100 ml of distilled water. Using a glass rod, stir the solution to mix it well. Using a dropper, take some nutrient solution and put 2 drops on a clean glass slide. Take a mature flower and dust a few pollen grains from its stamen onto the drop on the slide. After 5 minutes, place the glass slide on the stage of the compound microscope. Observe the slide through the microscope regularly for about half an hour. Observations. The pollen grain is uninucleate, that is, has one nucleus in the beginning. At the time of liberation, it becomes two-celled with a small generative cell and a vegetative cell. In the nutrient medium, the pollen grain germinates. The tube cell enlarges and comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descends to the tip of the pollen tube. The generative cell also passes into it. It soon divides into 2 male gametes. ये रहा how to prepare a slide. This will carry really 5 marks. And you have to prepare one slide, either a slide of pollen grain or a slide showing mitosis in case of onion root tip. You have to prepare only one slide, either to study mitosis through onion root tip or to study pollen germination. 2 स्लाइड आपको बनानी है और दोनों में 5 नंबर है। 3 नंबर लिखने पर है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिक्वायर्ड, थ्योरी, एंड देन यू हैव टू ड्रा अ डायग्राम। हमने pollen grain का डायग्राम आपको बनाया था, याद होगा। एक साइन है, जर्म पोर्स हैं, इंटाइन है, सिंगल न्यूक्लियस है। इसके बाद अनइक्वल डिवीजन होगा। एक साइड में एक छोटा सा सेल बनेगा, जनरेटिव सेल, और एक बड़ी सी सेल बनेगी, वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल लेटर ऑन गेट डिटैच्ड एंड इट फ्लोट in the vegetative cell, and at this 2 cell stage in few plant, and in few plant this generative cell get divided into two male gamete. जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेगा। और वेजिटेटिव सेल क्या होगा, उसका न्यूक्लियस इट विल पास थ्रू pollen tube and later on it disintegrate and degenerate. What happens to 2 male gamete? 1 male gamete fuses with egg cell, that is called syngamy, embryos form. Another male gamete fuses with secondary nucleus. Fuses with secondary nucleus. क्या बनेगा उसमें? PEN बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट लेटर ऑन फॉर्म्स एंडोस्पर्म। तो इसमें आपसे पॉलन ग्रेन के बारे में
प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ सकता है। मेल गैमेटोफाइट क्या है, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या है। जो पॉलन ट्यूब है अगर निकल गया तब तो पूरा मैच्योर हो गया मेल गैमेट। और अगर पॉलन ग्रेन में सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल सेल है, immature male gametophyte. So really pollen grain is immature male gametophyte which later on germinate, and after germination it gives pollen tube that will carry 2 male gamete. एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, what is pollination, what is direct pollination, what is indirect pollination. In case of indirect pollination, pollen grains are received by receptacle, by stigma of the pistil. But in case of direct pollination, pollen grains are received by ovule directly. In that case, ovule will be open, naked, as in case of gymnosperm. Ovules are naked, and from ovule, mucus will oozes out, and pollen grains which float in air, they come in contact with that mucus and they get entangled there. And as the mucus dry, gradually these pollen grains, they are brought into archegonial chamber. And in archegonial chamber, further process takes place. And even this process of pollination may take a month also in case of gymnosperm. But in case of angiosperm, it will take few hours, few days only. तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई है ना, इतनी बात आपके समझ में आ गई. यस, देन रेज योर हैंड. Now you are able to prepare a slide also, and you have a concept about pollen grain. अगर अब भी pollen grain का concept आपके पास नहीं है तो क्लास 11th में चले जाइए, वहां से आपको फिर से पढ़ाया जाएगा जब हम आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे, है ना. तो यू आर मोस्ट वेलकम इन क्लास 11th. आ जाइए, एक साल 11th फिर से पढ़ लीजिए मन करके, जब लग